अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू चेयर रिएक्शन यूट्यूब चैनल। सो आज का एक वीडियो फ्रॉम आउटडोर यूट्यूब। ही इज़ द गाय ल्यूक हिज नेम। सो आउटडोर कैंपिंग की वीडियो है, तो देखते हैं क्या कुछ है वीडियो में। शुरू करते हैं। Luke here at the Outdoor Boys YouTube channel, and I'm here in the woods of Alaska, and I'm building survival shelters from scratch. I'm cooking amazing food, and we're doing some extreme camping. It's gonna be a great time. Come along with me. You're gonna enjoy this video. That's a footprint of a snowshoe hare right there. Those are snowshoe hare poops. And sure enough, there's a rabbit right over there. As long as I pretend like I can't see him, he is just gonna sit right there. There he is. क्या टेम्परेचर होगा? Just stop to look back at me and see if I'm chasing him. If you ever scare up a rabbit, just be cool, and they'll usually stop right before they get out of sight to look back at you. All right, we got plenty of dead wood for our shelter and for a fire. I think this looks like a pretty good spot right here. I'm gonna build my shelter between these three dead trees, so I'm gonna need to chop down at least 12 to 15 dead trees. I need a little snack break. I got a very Alaskan lunch here. Okay, if you haven't spent a lot of time in the Alaska bush, you might not be familiar with pilot bread. It's a shelf-stable cracker, kind of like a saltine with less salt, and it's one of the 4 basic food groups in the bush here in Alaska. Now, pilot bread is a little bit dry, so you need something to wash it down with, and for that, I like powdered tang. And if you go out in the bush and someone offers you orange juice and bread, there's a good chance you're gonna get this. Got some smoked wild-caught sockeye salmon to go with it. All right, I got a good pile of trees going here. I need to take all the limbs off them. To do that, I'm going to use a Japanese nata. This is like a hatchet with a chisel edge. Bought this thing in downtown Kyoto, Japan Japanese with Tommy nata. a couple years back. ये इसके क्या कह सकते हैं, इसे चाकू या जो भी whatever। शेल्टर बना रहा अपना शेल्टर सोने के लिए, कैंपिंग के लिए ऑब्वियसली। स्मार्ट है, ये बहुत स्मार्ट है। इसकी मैंने वीडियोस देखी हैं। इज़ वेरी स्मार्ट।
That seems nice. So this is my sleeping platform, and I've got to be really thorough and go through and take out every little knot and stick, because I don't want anything putting a hole in my sleeping bag, and I don't want to have anything stabbing me in the back while I'm sleeping. So this is one of those jobs that you really want to take your time and do it right. You also want to get the edges of the front and back log as well, because if your tarp goes up the back or you dangle your legs off the side, you don't want ripping any material. लकड़ी को अच्छी तरह से वो उसको तराश के जो भी उसे यानी उसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर ले, कोई कांटा, कोई उसका जो छिलका वगैरह होता है, पील या जो भी, वो जब आपके टार्ट को लगे या स्लीपिंग बैग उस पर रखे तो वो उसे पंक्चर ना करे, फाड़े ना। तो इस वजह से अपना टाइम लें, उसे साफ़ करें, को ये बता रहा वो। I've only been here for 3 hours and the sun's already setting. Oh, it gets dark so quick up here. All right, guys, here's my bag of lamps. About 5 pounds of just lights. We have 18 hours of darkness here. So you got to bring a lot of lights and a lot of batteries. And this right here is my box of batteries. Temperature minus I've got 40, 16 30. GoPro batteries, and a backup battery for my cell phone and for my GPS. That weighs another 5 pounds. So between camera batteries and camera lights, I've got about 10 pounds of gear I bring with me at a minimum on every one of these trips. 10 पाउंड तकरीबन उसकी बैटरीज का, जो उसके कैमराज हैं, इन चीज़ों का हो जाता है। वो 10 पाउंड, 10 to 12 पाउंड, तो ये अपने साथ कैरी करता है। मतलब काफ़ी वेट कैरी करना पड़ता है कैंपिंग के लिए, ज़ाहिर सी बात है। उसमें बैटरीज हो गई अगर आप शूट कर रहे हो, खाना, फायर के लिए सामान, लिक्विड ऑयल, ये वो चीज़ें सब कुछ, यानी कि मेडिकेट भी होती होगी साथ में। I'm sure I'll find those in the spring. Well, I didn't get as much done as I was hoping, but the sun has set. और ये टार्ट को उस एंगल से लगा रहा है कि अगर हवा आए तो उसे ब्लॉक करे। तो ये भी एक सीखने वाली बात है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ही इज़ वेरी स्मार्ट। विंड को रोकने के लिए टार्ट उस एंगल में लगाएं कि विंड अगर टकराए तो डायरेक्ट आप पर ना आए, टार्ट आपका उसे ब्लॉक करे। Run on twilight, so I need to hurry up and get some firewood and gather up everything around the camp because it's going to get really dark real quick. I brought along a couple caribou hides. I'm going to lay them down on the wood to help protect my sleeping bag and to give me some insulation. This caribou hide is a really good insulator. The hairs of a caribou are hollow, so they make really good insulators. But for us, I think it's हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते जानवर की खाल को। I've been camping on these for 3 years and they're still doing great. इन जानवरों की खाल को, लाइक जो जंगली हो शायद उनके लिए। बैग हवा भरने के लिए कोई पंप वगैरह नहीं है, लेकिन वो इस तरह से आप इजीली हवा भर सकते हैं।
right, I'm getting hungry. I need to cook some dinner. Oh, that dry dead pine goes up like gasoline. और ये जो दरख्त काटता है ये डेड ट्री है, मतलब सूख चुके हैं, इनमें मतलब कुछ भी नहीं है, डेड ट्री, मरे हुए। वैसे मज़ा तो आता होगा अंधेरे दूर बर्फ़ में, इतनी सर्दी में। जानवर भी जंगली होंगे नहीं यहाँ पे क्योंकि बर्फ़ है, और बर्फ़ चलेंगे तो बर्फ़ में धंसेंगे नीचे। बर्फ़ सॉफ्ट है, लुक एट दिस, सेम लाइक पाउडर, तो फ्लफ़ी, उसमें धंस जाएंगे। ऊपर से टेम्परेचर भी इतना, यहाँ पे कोई नॉर्मल जंगली जानवर नहीं होगा। You know, cold tank is okay, but when you heat it up, it's like wassail or spiced oranges. It's actually really good. Alright guys, it's time for dinner and I'm going to be making something special. I'm roasting lamb shank. Oh, I love lamb. Alright, got that bone exposed. Got a touch of olive oil here. Just want it oily so that all the herbs will stick to it. Alright, we got some coarse salt. And some black pepper. We're going to set it over this fire and just sear the outside. देख लें, This is the way कि आप अपनी मीट को सीर कर सकते हैं। ये अच्छा तरीका है सीर करने का। Now we're going to roast it slow and low. I'm just going to go ahead and add some rosemary, thyme, and parsley to the roast. Oh my goodness, this smells गोरों का दम and it sounds amazing. बहुत टेंडर होगा, बहुत टेंडर होगा। I don't know what it is about shelling peanuts, but they bone taste is so much getting better when you shell हाथ them में आ जानी yourself. चाहिए। I think it's a metaphor for life. You just enjoy things a lot more when you have to work for them. All right, I got a little Indian butter curry and some instant rice to go with my lamb here. I'm going to start boiling that up. आप इस तरह का इंस्टेंट फूड साथ में लेके जा सकते हैं, like canned food या पैकेजिंग फूड, इस तरह का जो इंस्टेंट हो। Let's take a peek. देखने में तो अच्छा लग रहा है। Oh my goodness. मैंने बोला था आपको बोन अलग हो जाएगी। I also brought along a couple pieces of naan too, because you know, why not? Yeah. Oh, that's perfect. There we go, guys. Roasted lamb shank, butter curry, and naan. आप अपने नान, रोटी, चपाती जो भी हो से आप अपने शॉवल पे कर सकते हैं गरम वुड फायर के साथ। Just salt and pepper is so good. Oh, curry's good too. भूख लग गई यार देख के। Oh, I am stuffed. All right, well, I need to do some dishes. स्टफ लाइक इन पंजाबी तुन के खा लिया। All right, it's time to get ready for bed. टेम्परेचर कितना होगा अगर विंडी भी हो तो लाइक -40, 50, इतना तो 30 मे बी -30। I've got a little stuff sack. My tarp came in. I'm going to put my down jacket inside. And we're going to do a little DIY pillow.
Ah, there we go. Not too bad of a solution. Gotta be careful. Want to make sure I don't drop anything else in the fire, including myself. Luckily, I don't roll around much, so I think I should be okay. So I'm gonna put up this camera, and I'm gonna see you guys in the morning. See you in the morning. Oh, good morning. सुबह हो Oh, गई man, I मामू. slept really well last night. I'm उठ गए हैं so भाईजान. warm in this bag. When the fire was still going, it was heating the platform from underneath, and it would just be this nice, gentle, warm. हाँ, जो आपने वुड फायर लगाई थी उसके ऐश है जो या उसका कोयला, वो आप अपने उससे जो आपने ये जहाँ पे सोया हुआ उसने नीचे कुछ रखे होंगे लाजमी, और उस आग की भी, उस ऐश की भी हीट आपकी तरफ जाएगी, मतलब उससे भी एक काफ़ी वार्म और कूजी सा रोस्टी सा रहता है. Feeling coming up through the mat. But even with the fire out, I'm still a lot warmer than sleeping on the ground. I mean, the ground just sucks the heat out of you. ग्राउंड में सोने से बेहतर आप ऐसा सेटअप लगाएं, क्योंकि ग्राउंड ज़्यादा कोल्ड होगा, ज़्यादा ठंड होगी टेम्परेचर ग्राउंड पे, और जो आप ऊपर जाएंगे फायरवुड के साथ वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट मिलेगी. Build a fire and make some breakfast. Boots are nice and frozen. Oh, they feel like ski boots. Well, this shelter worked pretty well, but there's actually a feature that's really cool about it I didn't get to use last night. So, you know, that's not a bad shelter. That heat of the fire goes up and out. So when you elevate the bed, you capture more of the heat from the fire. इसने कवर किया जो हीट आग की वो ऊपर टकराए और फैले, ना कि बाहर निकल जाए सीधी. जहाँ पे वो उसने अपना स्लीपिंग बैग रखा हुआ वहाँ पे हीट टकराएगी जाके ऊपर जाके फिर उस तरफ. Keep working on this project and turn it into a proper long-term survival shelter. But I'm hungry. I'm gonna make some food now. पता नहीं ये क्या है, I don't know, like tuna maybe, नहीं tuna नहीं, ये flour. All right, got a pancake with fresh blueberries in it, not too like shabby. Pancake, blueberry pancake. Blueberry pancake. Some maple syrup. All right, fried spam and pancakes, good combination. It is hard to beat blueberry pancakes with maple syrup. All right, time for seconds here. Woo! Yeah. Oh. When I was a kid, me and my family would go camping here in Alaska, and we would go berry picking and pick wild blueberries, and Mom would make blueberry pancakes every morning. This brings back a lot of fun memories. All right, I think it's time to start cleaning this party up. Well, I'm definitely going to come back here. I'm going to put walls on that thing, maybe a roof. I'm going to seal it up all really nice and get it super toasty. But that's going to be another video. If you guys want to see that video, make sure to click subscribe to the Outdoor Boys YouTube channel.
We put out new videos every Saturday morning. All right, guys, I'll see you next Saturday. If you like this video, don't forget to check out the Outdoor Boys YouTube channel where we have hundreds of videos just like this. And don't forget to click subscribe so you can see other great videos every Saturday morning. And hit that bell button so you'll get notifications. Thanks for watching. ये था जी फ्रॉम आउटडोर यूट्यूब ल्यूक। अच्छी वीडियो थी। इस तरह की वीडियो में से आपको आइडियाज़ भी मिलते हैं कि आपने क्या क्या साथ रखना है, कैसे कैसे चीज़ें करनी हैं। तो इसका आइडिया अच्छा था। लाइक ग्राउंड से ऊपर इसने अपना शेल्टर बनाया, फायर इकट्ठी लकड़ी इकट्ठी की आग जलाने के लिए। उसी आग पे आपने अपने आप को वार्म भी करना है और खाना भी बनाना है। अगर इस तरह का एनवायरनमेंट हो, इस तरह का मौसम लाइक सर्दी में और जहाँ पे टेम्परेचर इतना हो, और कई जगह हैं जैसे पाकिस्तान का है नॉर्दर्न एरिया, उसमें क्या नाम है विंटर में काफ़ी बर्फ़ होती है, जैसे कि जीबी में लाइक बर्फ़ होती है काफ़ी, मरी में भी काफ़ी होती है, लेकिन समर में ग्रीन होता है तकरीबन आलमोस्ट जीबी तक या उससे आगे तक, काफ़ी आगे तक। मुझे अब नाम एकदम जहन में नहीं आ रहे जगह के। नॉर्थ जितना भी है हमारा वो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसमें ग्रीनरी है। आप ग्रीनरी में भी कैंप कर सकते हैं, और ग्रीनरी में वहाँ पे कैंप करें जहाँ पे रिवर क्रॉसिंग हो रही हो। आई थिंक द बेस्ट वे। आपको पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी, और बर्फ़ में आप वो स्नो जो है उसको बॉयल कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के, आप भी इंजॉय करेंगे। इसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरा देखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।